भाई का लड़का है। कल रात को वो ये मिलिटेंट के साथ ये हुआ ना, उसने तो वो शहीद हो गया वो। अब क्या बोले, देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल होगा ही नहीं है। सब लोग तो बोलता है देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना। अभी ऑलमोस्ट 5 इयर्स हुआ इनका सर्विस, 5 इयर्स हुआ सर्विस। अभी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। अब तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो डेली मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा। You see, my son Brijesh was born in military hospital, Jalandhar, and since that time he has always been in the army because I was serving the army. So his childhood has been within the army, and he has seen army life much more than any civilian life. So he was right from his childhood he was interested, and he was interested in joining army only. And in fact, as a child, he used to try and wear my army jackets and army coats, and he used to like that. And then even when we used to go on short trips, I used to be sitting in the front seat next to the driver as an army officer, and he used to be made to sit in the rear rows of seats. So he used to tell me one day, "Papa, I will one day sit in that the seat where you are sitting." So that was that much was his interest to join the army and be part of the great army in India. As an army man, even I have done the same, and we have to take the qasam. That is, we have to promise that we will, even if required, we give our lives for the nation. So our aim of cleaning out the militancy from those areas completely. So they should work harder, and they should work with more zeal and enthusiasm to ensure that our nation, our this part of the country is cleaned up totally from the militancy. गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए इसे। तो जिस तरह से आर्मी पर्सनल का लॉस हो रहा है, वो तो लाइफ का लॉस जो हो रहा है उसमें, उसके लिए तो लेना तो चाहिए, लेकिन कब लेगा कैसा लेगा वो तो अभी तक अभी कुछ पता नहीं। खाली डेली शहीद हो रहा है, डेली शहीद हो रहा है।